उपस्थित सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन करना चाहेंगे। माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभिनंदन करेंगे। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी। किशन रेड्डी जी को दीजिए। माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी अभिनंदन कर रहे हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। और अब माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का अभिनंदन करेंगे माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सुश्री मुग्धा सिन्हा संयुक्त सचिव संस्कृति मंत्रालय अभिनंदन करेंगे श्री राजीव बंसल जी का। और अभिनंदन श्री गोविंद मोहन जी का। श्रीमती तेमसी नारो त्रिपाठी जी निदेशिका एनजीओ में अभिनंदन करेंगे श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा जी का। और अभिनंदन श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी का। भारत सरकार की संस्कृति संयुक्त सचिव सुश्री मुग्धा सिन्हा जी से निवेदन है कि आप कृपया अपने स्वागत भाषण के लिए पधारें। आप सभी गणमान्य अतिथियों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सादर नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी होने जा रहे हैं, जिसके तहत एयर इंडिया की कला संग्रह को राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय को सौंपा जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हमारे गणमान्य अतिथिगण, माननीय मंत्री महोदय, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी, परम श्रद्धेय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ ही हमारे अपने मंत्रालय के प्रिय मंत्री जी, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं उत्तर पूर्वीय क्षेत्र विकास मंत्री जी श्री कृष्णा रेड्डी जी, मैं सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मंच पे विराजमान सचिव नागरिक उड्डयन मंत्रालय श्री राजीव बंसल जी, हमारे सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री गोविंद मोहन जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी नागरिक उड्डयन मंत्रालय श्री सत्येंद्र मिश्रा जी, विभिन्न विभागों से आए हुए हमारे गणमान्य अतिथिगण, अधिकारीगण, एम्बेसी से पधारे हुए हिज एक्सीलेंसीज, इट्स एन ऑनर टू वेलकम यू एंड हैव यू अमित अस टुडे। सभी कला प्रेमी सम्मानित नागरिकगण, मीडिया से पधारे हुए हमारे सभी मीडिया कर्मी साथियों, भाइयों और बहनों, इस विशेष अवसर पर मैं अपनी ओर से एवं संस्कृति मंत्रालय की ओर से पुनः आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि एयर इंडिया 8 दशकों से भी अधिक एक व्यावसायिक एयरलाइन के संचालन के द्वारा पहली एक ऐसी व्यावसायिक संस्था बनी जिसने कला में निवेश किया
और देश विदेश से बड़ी संख्या में बहुत ही मूल्यवान पेंटिंग्स, मूर्तियां, कपड़े पर बनी कलाकृतियां एवं फोटोग्राफ्स इत्यादि का संग्रहण किया। इस संग्रह में भारत के महत्वपूर्ण आधुनिक व समकालीन कलाकार, दैट इज मॉडर्न एंड कॉन्टेम्पररी पोएट्स, पेंटर्स की कृतियां भी शामिल हैं। उदाहरणतः बी प्रभा, शंकर पलिस्कर, लक्ष्मण पाई, वासुदेव गायकोंडे, एम.एफ. हुसैन, एच.एस. रजा, जतिन दास और अंजलि ईला मेनन इत्यादि, जो भारतीय समाज को जानने व समझने के लिए ज्ञान का स्रोत है। I'll be failing in my duty if I also don't introduce NGMA, which is becoming a repository of this entire collection of artifacts which is coming to us from Air India. राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जो सन 1954 से भारत में आधुनिक व समकालीन कला के क्षेत्र का उच्चतम संस्थान है एवं अपने बहुआयामी कार्यों व सफल प्रयासों के द्वारा देश विदेश में जनमान्य से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। इसको ये दुर्लभ प्रकार की कलाकृतियां आज इस विशेष अवसर पे हमारे माननीय गणमान्य अतिथिगण के समक्ष एक्सचेंज होंगी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में 18,000 से भी अधिक कलाकृतियों का संग्रह है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इन संग्रह को हम देश विदेश के नामचीन कलाकारों की जो कृतियां हैं उसके बदलते स्वरूपों को दर्शकों के बीच में विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों के माध्यम से लेकर आते हैं। आज एयर इंडिया का कला संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में शामिल होने जा रहा है, जो कि जन साधारण को कला से जोड़ने एवं राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के संस्थापक उद्देश्यों को हासिल करने में एक अहम भूमिका निभाएगा और हम सब आज इसके साक्षी होने जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार अपनी ओर से और संस्कृति मंत्रालय के ओर से आप सभी गणमान्य नागरिकगण और खास करके आज के इस कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथिगण, हमारे माननीय दोनों मंत्रीगणों का एक बार पुनः आभार के साथ स्वागत करती हूं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति लेती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको अभी बताया, एक वाणिज्यिक एयरलाइन यानी कमर्शियल एयरलाइन के रूप में अपने 80 से अधिक वर्षों के व्यापक संचालन के दौरान एयर इंडिया ने पेंटिंग्स, मूर्तियां, लकड़ी की नक्काशी, सजावटी सामान, फोटोग्राफ सहित दुनिया भर से बड़ी संख्या में मूल्यवान कलाकृतियों का अधिग्रहण और संग्रह किया, जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय का हिस्सा बनेंगी। ये निर्णय ऐतिहासिक महत्व रखता है। आइए देखते हैं एयर इंडिया कला संग्रह पर तैयार की गई ये लघु वीडियो फिल्म।
जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन श्री राजू बंसल जी, सेक्रेटरी कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री गोविंद मोहन जी, जॉइंट सेक्रेटरी सिविल एविएशन सत्येंद्र कुमार मिश्रा जी, जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर मुग्धा सिन्हा जी, डायरेक्टर एनजीएमए टेस्टुनार जमील जी, और His Excellency ambassadors from different countries, officers of the civil aviation and culture, media friends, आज एयर इंडिया महाराजा कला संघ के ट्रांसफर के लिए जो एमओयू का कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। एयर इंडिया सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो अमूल्य कला संग्रहों को जो संग्रह किया है, अभी अभी हम देखते थे बहुत पुराने कलेक्शन 1950 से लेके एक कलेक्शन है। आज संस्कृति मंत्रालय को ट्रांसफर करने का आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का समक्ष में आज एमओयू होने वाला है। वो आप पेंट्स देखने के बाद, जो आर्टवर्क देखने के बाद, जितने भी जो पेंटिंग्स है, जितने भी आर्टवर्क्स है, वो सही जगह पर आ जा रहे हैं। क्योंकि 60s में 59 में भी मॉडर्न आर्ट का जितने भी कलेक्शन है, आज हमारा एनजीएमए में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट पर आ रही हैं। क्योंकि एनजीएमए आज मॉडर्न आर्ट को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणा के द्वारा अपना विरासत संग्रहित कर रही है। आज यह कार्यक्रम उसका एक उदाहरण भी है। हमारा मोदी सरकार जी का जो विकास भी हो, विरासत भी हो। भारत का आजाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में कल्चर मिनिस्ट्री हो, भारत सरकार हो, अपने संस्कृति को, अपना विरासत को, अपने अनसंग हीरो जो आजाद के लिए संघर्ष किया, देश के लिए जो बलिदान हुआ है, वैसे महान भावों का हिस्ट्री भी आज का पीढ़ी के सामने लाने के लिए भारत सरकार लगातार 1 साल से काम कर रही है। उसके अंतर्गत अलग अलग म्यूजियम का हम स्थापना किया है। अलग अलग जगह अलग अलग कार्यक्रम किया है। आज उसके अंतर्गत एक ये माइलस्टोन होगा। इस एमओयू के लिए मैं मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। एनजीएमए वर्ष 1953 से इस आर्टवर्क्स का एक्विएशन एंड प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो भी आज एयर इंडिया का जो भी आज हम प्रोक्यूरमेंट कर रहे,
एक्विएशन कर रहे, जो ट्रांसफर होगा हम पूरा तरीका उनको आने वाले दिन में देश के जनता के सामने आने वाले पीढ़ी के लिए हम प्रिजर्व करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अभी तक एनजीएमए के पास लगभग 18,000 अलग अलग आर्टिफैक्ट्स है और आने वाले दिन में भी एक विशाल संग्रह बनाने के लिए इस जो जितने भी आज ट्रांसफर हो रहे उसके दृष्टिकोण से हम काम करेंगे। मैं इस शब्द के साथ फिर एक बाद में एयर इंडिया के जितने भी ऑफिसर्स है, मिनिस्ट्री भी है, स्पेशली आदरणीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कल्चर डिपार्टमेंट की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूं आने वाले दिन में कल्चर मिनिस्ट्री सिविल एविएशन से मिलके लगातार आगे भी काम करेंगे और ऐसे एमओयू आने वाले दिन में अलग अलग, क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री का जो भारतीय का संस्कृति हम प्रिजर्व करना चाहिए और दुनिया के अलग अलग जगह ले जाना चाहिए। इसका दृष्टिकोण से एयर इंडिया से मिलके हम जरूर काम करेंगे। जो भी अभी एयर इंडिया प्राइवेट सेक्टर में गए, फिर भी भारत सरकार सभी लोगों से कल्चरल एंगल से मिलके काम करने के लिए प्रयास करे। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से मिलके प्लान का काम कर रहे, अलग अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एंकरेजमेंट कर रहे, कल्चरल हो, कला संस्कृति हो, अलग अलग म्यूजियम्स हो, प्राइवेट म्यूजियम्स हो, इवन लाइब्रेरीज हो, ऐसे सभी लोगों से मिलके काम करे। डिजिटलाइजेशन का भी काम, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन का काम भी भारत सरकार जोरदार से काम करे। मेरा विश्वास है आने वाले दिन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ हम भारत सरकार भारत का कल्चर को, भारत का विरासत को प्रिजर्व करने के लिए हम आगे काम करेंगे। मैं फिर एक बार में आज़ाद का अमृत महोत्सव संदर्भ में आप सब लोगों को मैं शुभकामनाएं देते हुए इसका कार्यक्रम जो आज एमओयू होगा, इसके द्वारा इसका कब वापस लाना, कैसा प्रदर्शित करना, एक एक्शन प्लान बनाकर हम आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका बहुत धन्यवाद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन तथा इस्पात मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से निवेदन है, आप कृपया सभा को संबोधित करें। Seated on the dais with me, my colleague and, if I may say so, my good friend, Adarniya Kishan Reddy Sahib, Minister of Culture and Minister of Donor, on whose wide shoulders and broad shoulders, if I may, rests the responsibility of the cultural resurgence of India across the globe. The responsibility given to him by Prime Minister Adarniya Shri Narendra Modi ji. Seated on the dais with me, both our secretaries, Secretary Civil Aviation Rajiv Bansal ji, Secretary Culture Govind Mohan Sahib, our joint secretaries of both departments, Saten Mishra ji, Piyush Srivastav ji, Mugdha Sinha ji, Vikram Devdutt ji, CEO of AIHL, seated here with us, Acting Director of NGMA, Temsonaro Jamir Tripathi ji, our ambassadors of Austria and Belgium, our CEO of the new avatar of Air India, Campbell Wilson ji, and many of you before us who are passionate about Bharat Mata's sanskar, sanskriti,
her 5,000-year-old history, a history that is powered by her adhyatmik shakti, a history that is powered by her Sanskriti, and a history that will once again enable her to emerge as a world leader, both in economic terms and her Mridu Shakti, her soft power. Ladies and gentlemen, it indeed is a great privilege, if I may say so, and a great honor to be here today on stage with my colleague and my friend Kishan Reddy ji, who under the leadership of our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has insisted on, who has stressed on, not only India's economic emergence on the world stage, but also her cultural re-emergence on a global stage. The latter responsibility has been well entrusted to my colleague and my brother Kishan Reddy ji, who over the past many years has very passionately taken up this cause, not only across the length and breadth of India, पर यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक भूमिका, भारत की पारंपरिक भूमिका की एक नई ज्योति जगाने का कार्य मेरे भाई किशन रेड्डी जी ने किया है। आज उस विचारधारा के साथ उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए आज एक छोटा सा कदम, एक छोटी सी बूंद उस समुद्र में, a small drop in that large ocean of Bharat Mata's culture is being contributed by the Ministry of Civil Aviation through this exposition of India's modern art, ancient art capability. Air India has always been a figurehead, a representation of both those elements that I have spoken about. India's economic capability. An airline in those days, in the early 1900s, when very few countries, very highly economic developed countries could also think that big. It was India and Air India and GRD Tata who thought of a great idea. And right from its inception to the first mail courier aircraft, which he himself piloted from Karachi to Mumbai, to the first international flight between Mumbai and London, to the first longest non-stop flight between New Delhi and New York, Air India has had many firsts to its name. And along with that tremendous capability in the skies, the founder of Air India, GRD Tata, had always thought of contributing to the national mainstream in terms of India's soft power itself. And what a forward-thinking innovator he was, in a time when I can confidently say no airline in the world
thought of the contribution to the cultural aspect of its country, J.R.D. Tata stood out as a pioneer. And this video that all of you have observed today, and I would like to tell Kishanji also, ये तो मात्र एक झलक है इस कला के संग्रहालय में जो क्षमता है, जो विभूति है, करीब करीब 4000 पीसेस हैं आर्ट। मैंने स्वयं भी इसके बारे में बहुत सुना था, पर कभी देखने का मौका नहीं मिला था। और जब 2021 में पिछले वर्ष मैंने मुंबई की ऐतिहासिक एयर इंडिया बिल्डिंग नरीमन पॉइंट, which by itself is a testimony to the capability of Air India. In that building, we held an art exhibition where we showcased probably only 4 to 5% of this art collection. But in that art collection, you had not only paintings that have been shown here, not only sculptures that have been shown here, but even the menu cards of Air India during that period were a piece of art. It's not the contemporary menu cards that you and I receive when we board aircrafts today, domestic or international. They were large menu cards this size, an artwork on its cover, beautifully engraved in the interior. And from menu cards to artifacts, to textiles, to music, to clothing, the repertoire is expansive. And if you look at artists, from Jatin Das to Anjali Ila Menonji, we saw Prabhaji's arts exposition in this film that we have seen, the great M.F. Husseinji, even V.S. Gaitonde. And each piece of art of Gaitonde's today on the international market is priceless. And in this collection that is being handed over to you today, you have many Gaitondes as part of this collection. You even have an ashtray which has been sculpted by Salvatore Dali. And that was the beauty of Air India. And now you'll ask me, how come that came to be? Because Air India, in its passion of not only providing a capability on the airspace, also transported our culture. Many of the paintings that you will see in this collection, Salvatore Dali's ashtray that you will see in this collection, is all a contribution in kind for the fare that was to be paid while flying by Air India. And so many of these artists contributed their art, their passion, which has now become a part of this wonderful historical connection. And in this collection you will see not only modern art, which rightfully Srimati Tripathi ji needs to be housed in the NGMA, the National Gallery of Modern Art, but you also see our handlooms, right from Madhubani to Varli, to Rabri, to Phulkari, to Kalamkari. All of that is also a part of this collection. And therefore today it gives me a great sense of pride. And I would like to thank symbolically today's representative of Air India in the form of Campbell Wilson ji also, that this collection is being handed over to none other than the Culture Ministry and the National Gallery of Modern Art, where I sincerely hope it obviously cannot be displayed in its entirety, but certainly like the MoMA, the V&A in England,
you must have a revolving exhibition where even if you show 10% from a seasonal variation, you keep changing that collection, and therefore you bring in people who are passionate about art to keep viewing the changing collection as it's going on. And I would like to request my brother Kishan Reddy ji also that this exposition of art should not be confined only to the NGMA in Delhi. It should become a traveling expedition. And it must go to various states in India. Because I certainly found it to be extremely educative for me. People such as myself who have an interest in art, an interest in culture, but do not get an opportunity to be exposed to it often enough. These are wonderful opportunities to learn about our Indian painters, our Indian sculptors, our Indian weavers, and the capability that they have brought, and how they have taken our Tiranga and planted it not only on the Indian stage, but today, these artists of ours have actually taken our Tiranga and विश्व पटल पर गाड़ के रखा है हमारे सभी संस्कृति को और हमारे आर्ट को, हमारे कला को, इन सभी पेंटर्स के द्वारा. So on this day, it gives me great pleasure in handing over this collection, and I am very confident that under Kishan Reddy ji's able command, the soft feeling of this collection and its capability in terms of not necessarily reaching our minds, but certainly entering our hearts, will become a reality. Thank you very much. आपका बहुत धन्यवाद. और अब वो घड़ी जब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी एनजीएमए, एयर इंडिया, संस्कृति मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड के बीच एमओयू साइन किया जाएगा. इसे साइन करेंगे नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से संयुक्त सचिव श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संस्कृति मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव सुश्री मुग्धा सिन्हा, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड की तरफ से उनके सीएमडी श्री विक्रम देवदत्त और एयर इंडिया लिमिटेड की कंपनी सेक्रेटरी श्रीमती कल्पना राव, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की तरफ से डायरेक्टर एनजीएमए श्रीमती तेमसुनारू त्रिपाठी. मैं विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि वो एमओयू साइनिंग के लिए साइनिंग टेबल पर पधारें. मैं दोनों मंत्रालयों के संयुक्त
सचिवों से निवेदन करती हूँ कि आप MOU साइन करें। आपका बहुत धन्यवाद। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं NGMA की निदेशिका श्रीमती तेमसु नारू त्रिपाठी को आमंत्रित करती हूँ। On behalf of the Ministry of Culture and the National Gallery of Modern Art, I extend a very hearty vote of thanks to the respected dignitaries, Sri Jyoti Aditya Scindia, Honorable Union Minister of Civil Aviation and Steel, and Sri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of Culture, Tourism and the Development of Northeast Region. I would also like to express our sincere thanks to the Secretary, Sri Rajiv Bansal, and Joint Secretary, Sri Satyendra Kumar Mishra from the Ministry of Civil Aviation. I also wish to thank the Secretary Sri Govind Mohan and Joint Secretary Srimati Mugdha Sinha Madam from the Ministry of Culture for supporting our ambitious endeavors of the museum. Last but not the least, I extend my heartfelt special thanks to the Excellencies, the ambassadors of various countries present here, and ladies and gentlemen for joining us for this historic occasion. Thank you. Dhanyavad. और अब हमारा आज का कार्यक्रम संपन्न होता है। हम मंच पर उपस्थित माननीय मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पहल को एक साकार अंजाम दिया और अब जल्द ही आम जनता भी अर्जित की गई कलाकृतियों को NGMA की गैलरियों में देख सकेगी। आप सबकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हम जलपान के लिए आमंत्रित करते हैं। Ladies and gentlemen, kindly join us for high tea. Thank you.